फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। हेलो एंड वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ क्रिकेट नेक्स्ट एंड वेलकम टू दिस इवनिंग लाइव, जहां पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं द ब्रेकिंग न्यूज इन वर्ल्ड क्रिकेट और रादर इन इंडियन क्रिकेट राइट नाउ, व्हिच इज हार्दिक पांड्या हैज बीन अनाउंस्ड एज द नेक्स्ट मुंबई इंडियंस कैप्टन। इंडियन क्रिकेट इज अ गिफ्ट दैट कीप्स ऑन गिविंग। हर रोज कुछ नया नया तहलका आता है, कोई बड़ी न्यूज आती है, और आज की बड़ी न्यूज विच विल प्रॉब्ली गैदर a lot of attention for the next coming few days or weeks for that matter, and this is the news that Hardik Pandya will be leading the Mumbai Indians, one of the most successful franchises right now. And इसी बारे में और बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं जेमी ऑल्टर, साहिल मल्होत्रा और चेतन नरूला. Hi guys, hi Sahil, hi Chetan, hi Jamie. Sahil, we'll start with you. Hardik Pandya, the next Mumbai Indians captain. How do you see this transition, this decision by the Mumbai Indians camp? बहुत सिंपल वे में कहूंगा, होना था ये तो सबको पता था, बट इतना जल्दी होगा ये नहीं पता था. So I think that's the immediate thing which kind of came to my mind, because see, Hardik coming from Gujarat wasn't just going to be as just another player in the middle order. There were bigger things in mind. There was a bigger picture in mind, and MI kind of always has that eye on the future, and this was one of the discussion points, after the last season too, that a future leader needs to be identified, because Rohit came in 2013. It's 10 years now, so change is the only constant, as we say, and cricket is no different to that philosophy, so to say. And Rohit was always kind of at the home stretch of his career, T20 career, so to say. And itna kitna aur khelna tha, 10 years as captain, one of the most successful captains in the history of the Indian Premier League. All that was done, but now MI needs to plan and build a team for the future, and they need a captain who's young, who has some sort of age on his side, and Hardik kind of fits the bill for them. Unka apna bachcha yaar, 2015 he started his cricket journey from MI only, and this was probably something which was on the cards, but I'm kind of surprised that it happened so soon. But again, so MI have kind of put all the speculations to rest. For the next 6 months would have been all about all these things, who would lead in MI. Rohit injured hota to Hardik stand in captain. So they put all the confusion to rest, and clarity is there. Hardik is going to be your captain. So the future is probably here for Mumbai Indians. Absolutely, the clarity, so to say, is here for the Mumbai Indian fans also. Jamie, Sahil is shocked कि ये decision आना था लेकिन काफी जल्दी आ गया. What's your take on this? Were you expecting this इसी season से, और even are you also shocked with the fact कि इसी season से हार्दिक पांड्या को captaincy दे दी गई है? I'm somewhat surprised. Now I've heard that apparently Rohit Sharma went to another franchise and says, "Do you want me?" And that franchise point blank said no. अब इस बात में कितनी सच्चाई है, I don't know, but clearly things are not, from the outside, things are not all well in the Suraj Barjatiya of the IPL. The moment Hardik Pandya was brought over, we had this discussion कि भाई that family first policy कहीं ना कहीं कुछ तो ठीक नहीं है ना. And if these rumors are to be believed, he went to a big franchise and they showed no interest. This is a man who's probably not in the happiest of places. But again, you look at his legacy, or 158 matches, 87 wins, 5 titles. He's obviously going to be around. They've not discarded him. He's going to be with Mumbai Indians. But I'd love to be a fly on the wall, when Rohit is in the room, but he's not being directly given the chance to lead. Of course, जब आप 10 साल से कैप्टनसी करते हो एक फ्रेंचाइज की, धोनी just drew level with him this year. Otherwise, Rohit Sharma had 5 wins, and nobody else had that. So let's see. Very keen to see. Because you also have to see kind of Rohit Sharma, the white ball batsman, is going through a very good phase after a long time. But the fact is कि 7 साल से उन्होंने शायद 400 रन पार नहीं किए एक IPL सीजन में. Will he go down the route of so many players कि जब कैप्टनसी का बर्डन नहीं है, उनका बल्ला बोलने लगता है? Who knows? Let's hope for Mumbai Indians से कि रोहित जो हमें एशिया कप में दिखे और जो वर्ल्ड कप में दिखे, वो मुंबई इंडियंस के लिए दिखे, because his batting has been very substandard for at least 6-7 seasons. Absolutely. And Chetan, your take on this decision by the Mumbai Indians camp. Rohit stepping down from the captainship, stepping down है, और मुंबई इंडियंस का डिसीजन था, उन्होंने खुद बनाया, ये तो देखना होगा. आपका क्या टेक है इस डिसीजन पे मुंबई इंडियंस की तरफ से? Well, first of all,
जब हार्दिक पांड्या वाली स्टोरी आई थी कि हार्दिक इज गोइंग एंड दिस कॉन्वर्सेशन हैपेंड, द फैक्ट दैट दे वांटेड हार्दिक in a transfer window, in a player exchange, they were okay with just paying cash, so much cash. From that perspective, I'll take the question in just a bit. Um, from that aspect, you always knew, ये जो desperation है, this is nothing to do with just getting an all-rounder. और ये चीज हमने notice की है, Mumbai Indians desperately need an all-rounder. उनको कोई नहीं मिला है to fulfill the Pollard role, where you bowl some overs and you take charge of the middle order. They tried Cameron Green, वो नहीं हुआ. They tried a few other names, वो नहीं हुआ. So from that perspective, they needed somebody to take that particular role on, and Hardik Pandya seems to fit that role. But this was not just about, just bringing an all-rounder in. The fact that Hardik has done so well as captain of Gujarat Titans, this was obviously done from a captaincy potential perspective. Obviously, I thought, maybe there's another year for Rohit Sharma as captain, and then maybe from 25 onwards. But then you join the dots a bit that, that news came where Rohit Sharma had asked the BCCI and selectors, that give me clarity in terms of my T20 future. तो उस तरीके से एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक तरीके से रबर स्टैंप लग गया है that there is no return for Rohit Sharma and Virat Kohli in T20 internationals for India. I think this is the bigger picture. Yeah. So there is no way, if they are not captain, so obviously there is no way that they lead in T20 internationals. That doesn't happen. But also the fact, if you're not captain and if you return as batters, then you need somebody of an equal or higher stature leading you. Okay, जैसा विराट के साथ हुआ, Rohit was leading. For Rohit and Virat to come back and Hardik Pandya to be the captain, that's almost an impossibility, or let's say an improbability. It does not make sense. So हम जो पिछले 3 T20 से आंसर ढूंढ रहे थे, I think this kind of puts a rubber stamp on it. As always, there is nothing coming from the BCCI. It's the IPL that is giving us answers. So that's from a wider perspective from Rohit Sharma. So no surprises that Hardik is captain, but at the same time maybe a little too early. But then that's again a factoring of kya Rohit Sharma wanted to be captain going ahead, did Mumbai Indians want him to be captain going ahead? क्योंकि आप एक तरीके से देखिए कि पिछले 2 साल से जो हुआ है Mumbai Indians camp में, in a way that is tarnishing the legacy that Rohit Sharma had of 5 IPL victories. They have given him a shit team. Let's be very honest about it. It was not the best of selections that they did. Obviously, they were hampered by the fact that you can only 4 players retain kar sakte ho. Your purse goes there. Hardik Pandya had to leave because he could not be retained at a higher price, which he commands, and he should command. So there were a lot of handicaps, but they were not able to bring together a great team. I thought it was very un-Mumbai Indians-like over the last 2 years. So from that perspective, also, I think you were kind of tarnishing your legacy going ahead. And now it's a rebuild job that they have to do. So they need a new captain. Timely decision, surprising, but it has very, very wider implications for Indian cricket. Absolutely. And I know Jamie has to leave. Jamie, before leaving, one last question to you. I'll come to Taus Bhai. Taus Rizvi has joined us. Jamie, Chetan touched upon this. With this decision, what do you agree with Chetan about Virat Kohli and Rohit Sharma's future where T20I International is concerned? Is this decision anywhere related to what their future is in T20Is and the upcoming T20 World Cup? Look, in a logical world, it would make perfect sense. But we all know, like we discussed yesterday, जब तक BCCI आकर या ये खुद खिलाड़ी आकर नहीं बोलते हैं कि ये 3 player World Cup नहीं जाएंगे, we still have to keep that rather massive 1% chance. But look, Chetan's right. The IPL is what 90% of your criteria to get into the Indian team, T20 team. It comes from success in the IPL,
And if you don't have that brand value, notice what term I'm using, brand value. If you don't have that brand value and you're such a big player, obvious reasons would not get you back into the Indian team. I don't know how much Rohit Sharma not being the captain will actually end up playing a role, because again, BCCI on a best day is very short-sighted. Are they looking more at Rohit Sharma, the leader, 6 months down the line in the West Indies, or are they looking at him at that combination of someone who got the team to the Asia Cup final, won that, to the World Cup final, but also did a damn good job with the bat. अगर रोहित का कैप्टनसी और बैटिंग का कुछ combination hota, so you probably wouldn't have seen Mumbai Indians win 2 titles in the last 4 or 5 years. But Rohit, the batsman, I don't think deserves to go to the West Indies. And like Chetan said, Jab, you're not offering that tactician role. Kya jagah hai? So while I agree with Chetan, I'm still gonna wait until I don't know what the date is, April 31st या May 1st, जो भी है, जब तक वो squad नहीं आएगा या कोई आकर news break करे, Sahil, over to you to break something with Srini, or the BCI says, boss, we moved on. Even if it's that 1%, Kanav, that 1% is so massive because it's Virat Kohli, Rohit Sharma, and understand why I'm clubbing these guys together. आज हम बात कर रहे हैं रोहित की, but Rohit, KL Rahul, and Virat Kohli, to me at least, they're all on the same page because not one of them has played a single T20I for 13 months now. Absolutely. Thank you so much, Jamie, for connecting with us. I know you have to leave early, and have a nice day. Taus bhai, सबका हमने ओपिनियन जान लिया है, पहले वर्ड्स जान लिए हैं, ओपिनियन about this decision by the Mumbai Indians camp. What's your take on this? You follow Mumbai Indians थोड़ा ज़्यादा closely and you know क्या चलता है कैंप में और किस तरीके से टीम का एक सक्सेसफुल मंत्रा रहा है, लेकिन एक बहुत मेजर शिफ्ट है, एक ऐसा कैप्टन जिसने 5 IPL ट्रॉफीज आपको जिताई है, अब वो स्टेप डाउन करके एक नया कैप्टन आ रहा है जो कि दूसरी टीम को जिताकर IPL जिताकर आ रहा है. तो what's your take on this decision? See, all good things comes to an end. तो ये समझो यही हो गया है रोहित शर्मा के साथ. एंड आप अगर देखेंगे, आप पिछले डिस्कशन में अगर मेरे साथ रहेंगे तो आई हैव ऑलवेज सेड दैट रोहित शर्मा को थोड़ा रिलीव कर देना चाहिए और उनको उनका गेम एज हिज करियर सन इज सेटिंग, उनको एंजॉय कर देना चाहिए, एंजॉय करने देना चाहिए गेम. एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली शुड हैपन फ्रॉम हियर नाउ. रोहित शर्मा के ऊपर जो बर्डन था ओवर द लास्ट 2 years, इफ यू सी as a captain, he has not been delivering, as a batsman as well. तो वो complement बराबर नहीं हो रहा है दोनों का, leadership और individual performances, which might have been affecting not just team's performance but his value, brand value, or maybe not even brand value, performance value, या MVP अगर जिसको कहेंगे for Mumbai Indians. तो I think it's a good move. I believe ये बहुत अच्छा move है यार. ये रोहित शर्मा को एक freedom देगा. I mean, if you saw if we all saw what exactly happened in the World Cup. I mean, he was the captain on the field, but then जब responsibility की बात आती थी, भाई आप विराट कोहली आप करिए, आप जिम्मेदारी लीजिए पूरी, मैं यहाँ पर स्टार्ट अच्छा देके जाऊंगा, आप स्टार्ट को कैपिटलाइज करना है. तो वही रोल यहाँ पर मुंबई इंडियंस का, वो मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा करेंगे फिर से. और जो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है, which is like we are going to see Rohit Sharma who is going to entertain us much more than what he has been doing the last 2 years with the bat. So I think this is a beautiful move यार, मुझे तो अच्छा लगा. और exactly हार्दिक पांड्या was supposed, I mean, देखिए ऑलराउंडर पोलार्ड के जाने के बाद तो ऑब्वियसली वो एक वैक्यूम बहुत बढ़ गया था. वो हार्दिक शायद exactly वैसा रिप्लेस नहीं कर पाए पोलार्ड को, बिग हिट्स वो मैच नहीं कर पाए, लंबे शॉट्स नहीं मार पाए. बट देन ही इज अ वेरी गुड ऑलराउंडर, द ऑलराउंडर दैट वी ऑलवेज expected that he would go and deliver at the international level. The only thing I'm worried about is Hardik's fitness level. क्या वो 14 मैचेस कंसिस्टेंटली खेल पाएंगे? और अगर वो कप्तानी देख रहे T20 वर्ल्ड कप की 2024 की, क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे उतना? That is my only worry right now. बाकी मुझे कुछ नहीं. I'm happy रोहित शर्मा is gone and say no to हार्दिक पांड्या कैप्टनसी. जो ट्रेंड चल रहा है वो इमोशनल कर दिया लोगों को. But then the logic here is perfectly fine, and I think this is what exactly Mumbai Indians wanted. And I don't know about the fans exactly what Rohit Sharma might have wanted यार. वो अभी वर्ल्ड कप से गुजर के आए हैं, इतना ड्रेनिंग वर्ल्ड कप रहा है उनके लिए, सारे ड्रीम्स शैटर्ड हो गए. वो और नहीं करना चाहेंगे. उन्होंने IPL में बहुत अचीव कर लिया है, चैंपियंस लीग भी एज अ लीडर जीत चुके, अब और क्या जीतेंगे? ही इज वन ऑफ द टॉप T20 स्कोरर्स. तो लेट हिम एंजॉय हिज गेम और व्हाटएवर, लाइक इंडिविजुअली बैटिंग जो उनका स्ट्रेंथ है, फोर्टे है,
कैप्टेंसी को तो हर बार सबको मौका मिलता रहता है, तो उनकी हो गया फेस। 5 अगर ग्रीन स्टोन लोगों से पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि भाई उन्होंने अपना कोटा एस्ट्रोलॉजी का वो खत्म भर लिया, मटका हो गया, अभी आगे बढ़िए। तो आई थिंक दिस इज अ गुड मूव, इंटरेस्टिंग मूव, बट देखने लायक रहेगा। And this बिल्कुल। is where I think we can take that question, जहाँ पे बुमराह की बात हुई थी, जो इनिशियल क्वेश्चन था कि putting in, if we can have that comment, I think हर्ष का comment था, yeah, likes of Bumrah. Yeah, I mean Bumrah is I personally felt that he wanted to play a leading role, not just with at the IPL level, but also at the international level. He enjoyed his captaincy in Ireland a bit. But with Hardik captain, ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि वाइस कैप्टनसी ड्यूटीज मुंबई इंडियंस किसको देते हैं. I think Indian team में it's becoming very obvious कि it's Surya Kumar Yadav. Obviously, Bumrah hasn't played in these last 3 T20s. हमें नहीं मालूम कि is he going to play T20 cricket in the near future or not, whether he's going to come back straight for the World Cup. तो ऐसे में उनको इंटरनेशनल लेवल पर बुमराह को कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी देना थोड़ा टफ हो जाता है. But Mumbai Indians also need to make a decision given how Hardik is susceptible to getting injured, how often कुछ भी हो जाता है उनको इंजरी हो जाता है. So from that perspective, they need to have a backup leadership plan. Whether it's Surya Kumar Yadav, it seems like it will be Surya Kumar Yadav, or will it be Bumrah? It remains to be seen. But I feel it's going to be Surya Kumar Yadav only. Absolutely. And the Hardik की फिटनेस का सवाल लेके I'll come to Sahil, but before that Animesh Nath has joined us. Animesh, ताउस भाई ने बात की रोहित शर्मा द बैटर, अब कैप्टनसी का टैग हट चुका है, लेकिन रोहित शर्मा द बैटर हैज नॉट बीन इंप्रेसिव इन द आईपीएल फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ. तो आप अब कैसे देखते हैं रोहित शर्मा ओनली द बैटर को? क्या ये प्रेशर हटने के बाद उनकी परफॉर्मेंस और निखरेगी, या उनकी पोजीशन पे भी एक टाइम बाद, एक सीजन बाद या 2 सीजन बाद सवाल उठने शुरू हो सकते हैं कि अब आप कैप्टन भी नहीं है और आप रन भी नहीं मार रहे अगर उनके 2 सीजन सक्सेसफुल नहीं रहे विद द बैट? तो एज अ बैटर रोहित शर्मा को आप कैसे देखते हैं मुंबई इंडियंस के लिए? देखिए, रोहित के साथ ये चीज़ तो कभी अप्लाई नहीं होती कि वो अंडर प्रेशर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप में जो ओडीआई वर्ल्ड कप अभी उन्होंने खेला उसमें उससे ज़्यादा प्रेशर मुझे नहीं लग रहा वो किसी भी आईपीएल के सीजन में उतना प्रेशर उन्होंने फील किया होगा जो वर्ल्ड कप ये खेल रहे थे, वहाँ पे जैसी उनकी परफॉर्मेंस थी. तो किसी भी बल्लेबाज के साथ ये होता है कि आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं या फिर इन फॉर्म होते हैं, और वो कुछ 2 सीजन ऐसे थे जहाँ पे रोहित आउट ऑफ फॉर्म थे, और अभी जिस तरह से ओडीआई वर्ल्ड कप में उनकी फॉर्म दिखाई दी, तो टी20 फॉर्मेट के हिसाब से वो उनके लिए एक पॉजिटिव नोट था जहां से उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप खत्म किया. तो अगर यहाँ से आईपीएल खेलने के लिए आगे भी आते हैं तो मेरे लग रहा है कि एज एन बैटर वो एमआई के लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होंगे, और मुझे लग रहा है एमआई उनको एज एन बैटर तो कंटिन्यू जरूर करना चाहेगी कि वो एक बहुत अच्छा स्टार्ट दे सकते हैं जिस तरह की फॉर्म उनकी थी इन ओडीआईज, और जैसे स्ट्राइक रेट की जरूरत होती है आपको एज एन ओपनर, तो वो बहुत बेहतरीन होता है. तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एमआई उनको एज एन ओपनर अभी भी कंटिन्यू करेगी. एब्सोल्युटली. एंड साहिल, हार्दिक पांड्या की फिटनेस की बात हो रही थी. उनकी फिटनेस हैज ऑलवेज बीन अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द इंडियन टीम एंड आल्सो फॉर द मुंबई इंडियन टीम इतने सालों तक बिफोर ही वेंट टू जीटी. तो ऐसी सिचुएशन में डू यू थिंक हाउ इंपॉर्टेंट इज इट टू हैव अ वाइस कैप्टन, अ फिट एंड अ रिलायबल वाइस कैप्टन, क्योंकि आपको पता है कि आपका कैप्टन कभी भी मैच फिटनेस के कारण बाहर हो सकता है. तो कितना आप इस फैक्टर को कैसे देखते हैं कि जितना इंपॉर्टेंट, अब आपने हार्दिक पांड्या को कैप्टन तो बना दिया है, पर उनका बैकअप कौन होगा वाइस कैप्टन जो मुंबई इंडियंस को लीड करेगा इन केस हार्दिक पांड्या अगर फिट ना हो? No, I see no sense in not having Surya Kumar Yadav as Hardik Pandya's deputy because he's doing a phenomenal job with the T20 side. Looks very calm. मतलब ऐसा emotional leader type वो नहीं लग रहा है. And with Bumrah, I think there are bigger things in store for him. I can only tell this much for now with regards to captaincy. Maybe with the senior team pretty soon, where you need to kind of wait and watch for that. But there are bigger things in store for Bumrah, the leader, and there's always going to be space for him because he did impress during that T20 series, as Chetan mentioned, in Ireland. And I think he also led in one of the test matches. I'm not recalling which test match it was. He also led in one of the test matches. So he's always being looked at as that England, leader. India versus England, last Yeah, test. so he is. Yeah, so he is pretty much in the scheme of things when it comes to captaincy. With MIC, right now people are getting very emotional on Twitter कि MI ने रोहित के साथ गलत करा, sideline नहीं करना चाहिए था. Let's get some logic and cricketing logic in it. I think it's very important to keep emotion aside for now. There's a mini auction coming in about 4 days from now.
You can't have a captain attending that mini auction who you think is not going to be your captain for the next 3-4 years, because there's a mega auction after this auction. So you are essentially kind of assembling a squad which you would like to have for the next 3-4 years. So you are looking at future, you're looking at something which you want to you're looking at players you would want to continue for the next 3-4 years at least, and at least a captain to be in charge for that long. So you can't have Rohit doing that, because you never know how much cricket is left in him, how much T20 cricket is left in him, because he is going to prioritize the World Test Championship cycle, which is already undergoing, and there are a lot of challenging assignments there too. So abhi South Africa series, God forbid we lose the South Africa series, mentally it will be such a draining year for Rohit Sharma, the captain, that it's not a joke. So you need to take all those things into account too. And then you have a away series versus Australia next year, a 5-test home series against England. So there's a lot on his plate already. Now you don't want to complicate matters further by giving him the charge of for me, the cricket logic now says that, Hardik Pandya is going to be a T20 captain in the World Cup, 2024 T20 World Cup. I don't see a place, again, मैं 1% वो Jamie वाला agree करूंगा, you never know what could happen, but purely by logic, I don't see any place for Rohit Sharma, Virat Kohli, and even KL Rahul. KL Rahul could have signaled his intentions of batting in the middle order, but boss, KL Rahul in the middle order of a T20 game, आप क्या मतलब कॉफिन के ऊपर आप आखिरी नेल खुद ही हैमर कर रहे हो. You have such phenomenal players in the middle order. You have Rinku Singh, you have Hardik coming in, you have Surya Kumar Yadav. Then at 3, you probably have the services of Tilak Verma or Ishan Kishan. There's firepower all along. And then you have Jitesh Sharma at 6-7, and probably Ravindra Jadeja or Akshar Patel as the left arm spinner. So इसमें कॉम्प्लिकेट क्यों करनी है चीजें, क्योंकि बिकॉज सी बहुत रिपोर्ट्स हुआ, सब कुछ हुआ, आई डोंट सी 1 out of the 3 कमिंग इनटू द 11 और द स्क्वाड. आएगा तो पूरा पैक आएगा 3 का या 2 का. मेरे को इधर रोहित और विराट, इधर केएल और विराट और रोहित, ये नहीं होने वाला है, इतना तो क्लियर है. तो दे विल कम इन अ बंच, दे विल कम इन अ ग्रुप. ये तिगड़म साथ आएगा और बेड़ा गर्क होगा अगर तीनों साथ आ गए तो, क्योंकि मतलब अभी साउथ अफ्रीका सीरीज को इतना मैं डीपली नहीं रीड करना चाहता, क्योंकि अभी वो एक्सपेरिमेंट फेस चल ही रहा है. मे बी बाय द अफगानिस्तान सीरीज वील हैव some kind of blueprint in place for the way the 15 is kind of evolving and growing and kind of taking shape for the World Cup. But Hardik, to me, is leading that T20 World Cup side in the World Cup, and सूर्या उसका डेप्यूटी रहने वाला है. बुमराह वो सीरीज वो खेलने वाला है. शामी ने परसों एक आज तक के कॉन्क्लेव के अंदर बोल ही दिया है कि मैं तो पूरा तैयार हूँ T20 वर्ल्ड कप के लिए भी. अब लेके जाते हैं कि नहीं वो अलग मैटर है, बट ऑल दीज गाइज आर गोइंग टू बी योर कोर. नो, अब यू हैव 3 ओपनर्स ऑलरेडी इन शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़. सो व्हाई वुड यू वांट टू बेंच इवन वन ऑफ देम, बॉस? गिल के साथ ठीक है, डिबेट कर सकते हो आपकी, वो स्लो खेल रहा है, अच्छा स्टार्ट नहीं मिला, बट इज अ क्वालिटी प्लेयर, एंड यू आल्सो हैव ऋतुराज गायकवाड़ who's there. So there's no question about that. But bigger picture, I think for MI was important. और हार्दिक की हेल्थ की अगर हम बात करें, see, we did a complete show on that some time back. Taus bhai was also there. We kind of did try to answer all those questions कि क्या रहने वाला है, how his fitness is looking like, how the NCA is treating him. सो सिमिलर अप्रोच जो केएल के साथ रहा, श्रेयस के साथ रहा, बूम के साथ रहा, जो इनफैक्ट अभी ऋषभ पंत के साथ चल रहा है. पेशेंस हैज बीन द की, विल बी द की, longevity is in mind, because see, IPL franchises have continued to show the way when it comes to Indian cricket, whether it's in terms of selection, captaincy, something, whatever the case may be. IPL franchises ने वो क्यू दिया है, और आई थिंक अब सबसे बड़ा क्यू आपको हार्दिक का मिल गया यार. द मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज इन द हिस्ट्री ऑफ द IPL is giving you a cue that he is the leader, and I hope and pray अब BCCI सुने और फॉलो करे और ये सारी स्पेकुलेशंस खत्म करे. अब हेल्थ का इसके बियॉन्ड अब क्या बोले यार. अब वो कल को खुदा ना खास्ता सीढ़ी में पैर मुड़ गया किसी का, कुछ हो गया, गाड़ी के अंदर उंगली आ गया, अब उसके अंदर तो हम कुछ नहीं कर सकते. तो मैं तो वो बांग्लादेश वाली इंजरी वैसे ही देखूंगा. इट वाज अ फ्रीक इंजरी. मतलब इसके बियॉन्ड, मतलब इट वाजंट समथिंग व्हिच वाज ही वाज कैरिंग फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप. चेतन वाज देयर फॉर द एंटायर वर्ल्ड कप, आई वाज देयर. चेन्नई के अंदर जब हार्दिक पांड्या फुल थ्रॉटल बॉल डाल रहा था, बॉस, इट वाज अ डिफरेंट साइट इन चेन्नई. हीट एंड ह्यूमिडिटी, जब वो नेट सेशन कर रहा था ऑन 5th of October, दैट वाज समथिंग एल्स. It was a treat to watch him train in Chennai on 5th October when India's World Cup campaign actually got underway with that first practice session. So there has been one Kapil Dev and there will always be one Hardik Pandya. आप रिप्लेसमेंट्स ये सब के डिबेट छोड़ ही दो. एक कपिल देव था, उसको आप हार्दिक से कंपेयर मत करो, और एक हार्दिक है, उसको आप किसी से कंपेयर मत करो. Both of them within their own rights are kind of irreplaceable right now. कोई replacement नहीं है. So stick with them, wrap them in cotton wool and see what it does to Indian cricket then.
Sahil Malhotra has given us a headline. There was one Kapil Dev and there is one Hardik Pandya. Don't compare the two. But Sahil, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा. Was it the Mumbai Indians camp that went to Rohit and told him कि we are letting go of you as captain? Was Rohit Sharma going to Mumbai Indians and saying that okay, I want to step down as captain? क्योंकि अभी जो रोहित शर्मा की भी एक वीडियो आई, उन्होंने कहा कि I lost the ultimate prize, but the fans will help me to get motivate and focus on the next ultimate prize. अब T20 वर्ल्ड कप अगर उनको पता होगा कि वो नहीं खेल रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा कि रोहित शर्मा को पता ही नहीं कि वो अगला वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे हैं, आईपीएल का भी उनको पता होगा, तो वो इंडिकेशन था कि ही वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू द T20 वर्ल्ड कप? ये क्या माजरा है? क्या उन्होंने खुद स्टेप डाउन किया और वाज इट मुंबई इंडियंस who said कि आप प्लीज एज अ प्लेयर खेलिए, कैप्टन हम अब फ्यूचर में देखेंगे? I think it was a well crafted succession plan, boss. इसके अंदर no one went to no one कि boss, I'm stepping down or you need to step down. The priorities were set, right? And these are the kind of discussions which happen in a franchise. It's not that कि रोहित को बोला कि आप जाओ और जैसे अब जॉब थोड़ी यार कि रेजिग्नेशन दे दो और नोटिस पीरियड सर्व करो फिर 1 महीने का, ऐसा तो नहीं है ना उसके अंदर. So the writing was on the wall, as Jamie said, as I said earlier. We all knew that this is going to happen. Hardik is going to be your leader. He was not just coming into this franchise to play there as a number 5 batter and a bowler who could bowl with the new ball and a couple of overs at the death. That was never going to be the case. A player as big as Hardik Pandya, 15 crore league fee, you can't just have him in the side, as a player. So those things were always there. And with Rohit, I think it looks like अब उन लोगों ने it could have been एक बहुत डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो जाता अगर रोहित नेक्स्ट ईयर मतलब लीडर रहता है एमआई का, उसके अंडर आप हार्दिक को खिलाते, फिर हार्दिक आपका फ्यूचर लीडर ऑलरेडी था, बहुत केओस का रेसिपी था. आई थिंक वो एक सीजन एमआई ने बचा लिया है. अभी उनको ट्रोल कर रही है जनता ट्विटर के ऊपर, बट आई थिंक एमआई हैव सेव्ड देमसेल्व्स दैट वन सीजन ऑफ कंफ्यूजन, बिकॉज मेगा ऑक्शन में द रीसेट बटन विल बी प्रेस्ड अगेन. सो दे हैव सेव्ड दैट वन सीजन ऑफ केओस बाय डूइंग दिस. And full marks to them to kind of address the issue now and before leaving it for too late. For Rohit, I'm sure it's going to be a very difficult, very bitter pill to swallow, because as I said, it has been a very difficult year for him, very draining year. Not difficult, a draining year, because you came so close to winning the World Cup, and then he'll be in South Africa leading the side and hoping to breach that final frontier, then the 5 test series against England. So उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा अब ये तो कहना मुश्किल है, but ये है कि it's not going to be a good place for him right now. A very challenging and mentally draining year it has been, and this is going to just add to that mental trouble for sure. I'm not saying that he'll take it very sportingly and he'll just chill with a cup of coffee ki boss, it's okay, it's done. Obviously no player would want to do that. एब्सोल्युटली. एंड चेतन, यहाँ पर एक सवाल गोपाल साहा ने एक ओपिनियन दिया था. चेतन, शायद कोई नेटवर्क इशू चेतन के एंड से हो गया एंड ही हैज बीन डिस्कनेक्टेड, बट आएंगे वापस इस पे. ताउस, अगर आपसे ये सवाल पूछा, इफ रोहित प्ले अंडर हार्दिक पांड्या इन आईपीएल, देन यू शुडंट बी सरप्राइज्ड टू सी रोहित एज अ बैटर इन नेक्स्ट वर्ल्ड कप. सो आपका इस पे क्या टेक है? क्योंकि बात चल रही थी कि अगर आईपीएल में रोहित नहीं है, हार्दिक के अंडर खेल रहे हैं, तो वो वर्ल्ड कप में भी खेल सकते हैं. व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? The only person who can play World Cup if he does extraordinarily well, देखिए सिलेक्टर्स छोड़ दीजिए, क्योंकि सिलेक्टर्स ना आके जवाब देने वाले, ना सेक्रेटरी बीसीसी ऑफिशियल आके. यहाँ पर हमको खुद ही अनुमान लगाना है, खुद ही जाके ओपिनियन देना और खुद ही नैरेटिव एक पैदा करना और पुश करना है कि भाई सिलेक्टर्स वही कर. देखिए रोहित शर्मा सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किसका था यहाँ पर वर्ल्ड कप में? हम फॉरगेट कंपेयरिंग अबाउट द ओडीआईज में क्या किया या T20 अलग अलग फॉर्मेट है. जो स्टार्ट जो जबरदस्त दिया है, जो इंडिया का 10-0 डोमिनेशन रहा है, 11वां छोड़ दीजिए बैटली, वो रोहित शर्मा के बेसिस के ऊपर रहा है. जिस तरह से वो अटैक किए बैटर्स बॉलर्स को, जिस तरह से उन्होंने शुरुआत दिया है, और जिस तरह से विराट कोहली या बाकी प्लेयर्स जो प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके जंप मार के स्नैच करके वो बिल्डअप किए, रोहित के बिना ऐसा डोमिनेशन नहीं होता, बिल्कुल ही नहीं था. मुझे लगता नहीं है कि वैसा और कोई कर सकता है. देखिए आई वुड हैव विजन क्या है हमारा यहाँ पर हमारा विजन है क्या हम वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं, या हम यंगस्टर्स को ले जाकर जाइए आप सुसाइड कर लीजिए, आप जाके हारे या जीते कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप जाके एंजॉय करिए गेम और आ जाइए वापस. क्या हम डेस्परेट है जीतने के लिए? हम हंग्री हैं यार. 2023 का वर्ल्ड कप हम 50 ओवर का हार गए, तो हमको वी शुड गो एंड विन द वर्ल्ड कप 2024 T20 वर्ल्ड कप. क्या हमारा विजन वो है? तो अगर हमारा विजन जीतना है T20 वर्ल्ड कप, तो आपको रोहित शर्मा इज द बेस्ट ऑप्शन, द पर्सन विद द बेस्ट एक्सपीरियंस, द पर्सन हु विल बी विदाउट दैट कैप्टेंसी प्रेशर.
the person who can go and enjoy, give you a great start, and which will help the other batsmen to come and fill up, lay the क्या बोलते हैं उसको, फाउंडेशन को ग्रैब करे, अपॉर्चुनिटी कैपिटलाइज करे, तो वो बंदा रोहित शर्मा है. और यशस्वी जायसवाल के साथ रोहित शर्मा ओपन करना, व्हाट एन अटैकिंग कॉम्बो इट विल बी. आई मीन आप देख लीजिए, आपका बाकी सारा पजल सॉल्व है ऑलमोस्ट, विकेट कीपर छोड़ के. आप विकेट कीपर जितेश को ले जाएंगे या ईशान किशन को, वो एक मसला है. आई डोंट वांट केएल राहुल इन दैट, क्योंकि वो टॉप T20 में सिर्फ टॉप ऑर्डर खेल सकते हैं, नीचे नहीं खेल सकते. तो समझिए, तो रोहित शर्मा इज द गाय. आई थिंक इफ अगर यहाँ पर अच्छा गया उनका वर्ल्ड कप, तो व्हाई नॉट यार, लेट्स गो विद रोहित शर्मा. वहां पर हमको एक्सपीरियंस भी चाहिए. विकेट तो वैसे ही होने वाली जैसे इंडिया में थी, स्लो टर्नर. और यहाँ पर कितने लोग कंफर्टेबल हैं? क्या यशस्वी जायसवाल अच्छे ऑफ स्पिनर्स के सामने अपना अटैकिंग गेम खेल पाएंगे? कैसे डील कर पाएंगे अगर दो लेफ्ट हैंडर्स खेल ले? आपने ईशान किशन को साथ में ओपन करा दिया है कि नहीं? फिर आपके ऋतुराज गायकवाड़. आई मीन दे विल बी, सी क्रिकेट आपको देखिए, फेयरनेस, अनफेयरनेस, ब्रोकन ड्रीम्स, ये वो यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी, मगर आपका विजन क्या है, क्या गोल है? अगर आपको जीतना गोल है तो रोहित शर्मा इज द मैन. आई थिंक स्टार्ट के लिए, क्योंकि 20 ओवर का मैच है यार, 20 ओवर में आपको जो कुछ करना है आप उसी में ही कर सकते हैं, और रन बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यंगस्टर्स के साथ आप कितना रन बना सकते हैं, मुझे लगता नहीं है कि इतना बड़ा स्कोर हो पाएगा. एक अच्छा स्टार्ट जो रोहित शर्मा केपेबल है देने के, मुझे लगता है वही होना चाहिए. एंड दिस इज द गाय. I mean, this is the best time. He will go and enjoy his game as well as help Team India win the T20 2024 World Cup. 2023 का कंपेंसेशन मिल जाएगा उससे. तो उस भाई शुभम गर्ग आपसे डिबेट करने के लिए स्टैट्स लेके आए हैं थोड़े. रोहित्स परफॉर्मेंस इन द लास्ट 6 T20 वर्ल्ड कप एवरेज 20 शुभम गर्ग के साथ हूं. ताउस भाई आईपीएल का स्टैट्स भी देखो यार. लास्ट 2 साल का, सॉरी आई गॉट डिस्कनेक्ट. लास्ट 2 साल का. अभी आप ये आईपीएल में देखिए क्या करेगा वो. देखिए, it's not all about stats always. Personally, I don't see Rohit playing all games of IPL. Personally, I don't see him playing all games of IPL this year. Personally. वही मैं ये कह रहा हूँ कि स्टैट्स, हर बार स्टैट्स नहीं देखा जाता, हर बार सिचुएशन देखा जाता है. और अब रोहित शर्मा, अगर कैप्टेंसी बर्डन देखा जाए, या आप क्या सिचुएशन में थे, आपको क्या रोल दिया गया, अब यहाँ पर आप देखेंगे रोहित शर्मा विल बी अ डिफरेंट प्लेयर ऑल टुगेदर. वो अटैकिंग माइंडसेट से जाएंगे, तो आपको रोहित शर्मा वर्ल्ड कप में दिखे. यहाँ पर अलग ताउस भाई का क्या वो प्रेडिक्शन सही आता है कि नहीं. बट चेतन, रोहित शर्मा के वाइट बॉल फ्यूचर को लेकर अब वो धीरे धीरे सवाल और उठेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप अगला बहुत दूर है और कहा जा रहा है कि अगले वर्ल्ड कप तक शायद रोहित शर्मा ना वाइट बॉल खेलते रहे. लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी है अभी 2 साल बाद 2025 में, तब तक रोहित शर्मा शायद खेल सकते हैं. रविशंकर पूछ रहे हैं, रोहित शर्मा रिटायरमेंट फ्रॉम वाइट बॉल फॉर्मेट्स ऑन द कार्ड्स? ऑफ कोर्स, टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल, लेट्स सी, गोइंग टू बी इवेंटफुल अ फ्यू वीक्स ahead. What's your take on this? I don't have a take on this, obviously, because nobody retires from any format these days. आप जिस time अपना retirement announce कर दोगे, आपका brand value गिर जाएगा. So I'll be very surprised if Rohit Sharma comes out and says, "Oh, you know what? I'm retiring from ODIs and T20s." That's not going to happen. There's a certain brand value as long as he has to play. So from that perspective, nobody retires. I mean, who knows? They've already been told. Let's get one thing very, very clear. Yeah. Mumbai Indians is a very good franchisee. They know how to run their business. They know how to run their franchise. They're one of the most successful franchisees out there. Yeah. अगर आप ये कह रहे हैं कि they have done this as a surprise to Rohit Sharma, then you are absolutely clueless about how things are run. They are absolutely on board with Rohit Sharma. They have informed him what is happening. और एक और चीज का आप ध्यान रखिए, 2 दिन पहले रोहित शर्मा का एक वीडियो रिलीज हुआ है where he is talking about the heartbreak of the ODI World Cup. क्या वो वीडियो रोहित शर्मा ने पर्सनली रिलीज किया? नहीं. क्या वो वीडियो BCCI ने रिलीज किया? नहीं. Was he talking to the press? Was he talking to a news channel? No. Where was that video released? That video was released by Mumbai Indians. Okay? He is talking to Mumbai Indians. Mumbai Indians put out that video. What does that tell you? That their relationship is strong, still strong. Rohit Sharma is not a foolish cricketer. He's a very, very smart cricketer. He knows where the future is. Mumbai Indians are very smart. They know where the future is. क्यों उन्होंने हार्दिक को बनाया अभी कैप्टन? ताकि आप देखो कि क्या कमियां हैं स्क्वाड में.
एक सीजन, उसके बाद जब आपका मेगा ऑक्शन आएगा, देन यू नो समबडी हु इज गोइंग टू कैरी योर टीम फॉरवर्ड, ताकि वो उस स्क्वाड में जो भी आपके होल्स हैं उसको प्लग इन किया जा सके. इट्स अ वेरी वेरी कैलकुलेटेड डिसीजन. अगर आप कह रहे हो कि दिस इज एन इंसल्ट टू रोहित शर्मा, नो इट इज नॉट. He has served them very nicely for the last 10 years and they are faithful to Rohit Sharma as well. They're not going to just say, you know what, you're not going to be playing, hum aapko ye chucking aside. Ha, in the mega auction, when the time comes to retain players and all, tab unki kya communication बैठती है नहीं बैठती है, that is a different issue altogether. But right now, I don't think he has been sacked. I don't think there's any insulting thing that's going on here. This is something that is very, very planned. And let's not forget, it's a multi-billion-dollar industry. It's a multi-billion-dollar business. आपको क्या लग रहा है? मुंबई इंडियंस को बहुत मजा आ रहा था पिछले 2 साल जो उनके साथ हुआ है. They are 5-time bloody champions, the most successful IPL franchisee there ever is. So this is an ego issue. You know, you run your business in a very, very good manner. This is a business about money. This is a business about success in sport. एक चीज नहीं है, दोनों चीजें हैं यहाँ पे. It's not like run like Indian cricket कि हाँ भाई अभी हमारे पास टाइम नहीं है, अभी हमारा मूड नहीं है, हम देखेंगे क्या करना है. No, this is run in a very very systematic manner. This is run in a way कि boss, we need success on the field, which is why our valuation is so strong, which is why our franchisee is so strong. Everybody wants to play for Mumbai. There are very few franchisees which everybody wants to play for. CSK is one, Mumbai Indians is one. Obviously, then you get the luck of your auction key, whether you are able to go there or not. But अगर आप कोई player हो, आप CSK के लिए खेलना चाहोगे, Mumbai Indians के लिए खेलना चाहोगे, they take care of people once they retire. आप देखो Malinga, he was bowling coach for Rajasthan Royals for a couple of seasons. Now where is he? He's back with Mumbai Indians. आप Mumbai Indians के साथ खेल लेते हो, they take care of you for life. So I would be shocked. This would be the most shocking thing if Rohit Sharma and Mumbai Indians have fallen apart. ऐसा नहीं है, possible ही नहीं है. And the fact that Rohit Sharma is coming out and talking about his, you know, that he was hurt with that World Cup loss, he was dejected and everything on a Mumbai Indians platform, that tells you everything about that relationship. Now, you know, when you have been so badly dejected and disappointed, and you have been given a message potentially ki boss, you are not part of the plans for the T20 World Cup, it makes sense for Rohit Sharma and Mumbai Indians to sit down together and then get, obviously with Hardik Pandya on board, who's a winning captain with a futuristic purpose, ki ha, okay, you know what, this is the time to take the next step. This was similarly the way Rohit Sharma was made captain of Mumbai Indians. So ये सब बातें बेकार हैं कि उनकी इंसल्ट हो रही है या उनका रिलेशनशिप बिगड़ गया है and all of that. This is just pure nonsense. It just does not make sense, you know, from that perspective. Let's be very honest about that. So now coming to the question कि बॉस क्या वो रिटायरमेंट कर लेंगे या नहीं लेंगे, जैसा मैंने कहा, there is a brand value to protect. अब एक कमेंट ये भी आया था कि नहीं वो हार्दिक के अंडर खेल सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है. You know, from that perspective, आपको ये समझना पड़ेगा कि you know, when you're talking about the Indian thing, you have only 15 players और वहां पे कोई franchisee नहीं है. You're not out there to, you know, in an individual capacity. You're not there in the market as per. You're being selected to represent the country. वहां पे सिर्फ 15 spots हैं. अगर आप IPL की बात करें, ये एक बहुत बड़ा जंगल है. There are lots and कितने 300 players are there already in that auction, जिसमें से how many slots do we have? 50 slots? 333 players. No, but the slots available are what? 50 slots, 60 slots? Yeah, 5 slots. times. Something like that. There are 4-5 times the number of players who are entering the auction for the number of slots available. So वहां पे the possibility, the probability of playing under a Hardik Pandya is more, is bigger than say कि you know what, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो उनकी ईगो की बात है कि वो हार्दिक पांड्या के अंडर नहीं खेलेंगे इंडिया के लिए.
अगर वो अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, he will. But the possibility, the probability, because you have options like Jaiswal and Gaikwad and Gill, that probability comes down. That's there. Yeah, and बात यहाँ चल रही थी one साहिल. one Yeah, one quickly, just a viewer has also pointed it out. Just a quick correction to what Chetan was saying about Rohit's video. Rohit's video was done by Rohit Sharma's own personal management firm, Team Row 45, and it was just reposted by MIA and the other social media handles too. So just a little oversight on our part. And But I you think also know, no, but Yeah. Sahil, you also know team. I know, team- Chetan. Technically, Team Rohit Sharma is team Yeah, I Rohit know, you're Sharma right. is a bigger part of Correct. the Reliance, Yeah. the Rise the, group, the yeah. entire setup, the Mumbai Indians Yeah. setup. Yeah. You know? No, I think- get I think where it's your smart enough connection to is do that. coming. Yeah, No, I get where your no, connection is that's coming fine, from. That's fine. Yeah. That's fine. But you try and understand where I'm coming from. It's not just Yeah, about no, I get it. I get it. Mumbai Indians are not going to Yeah. shoot, कि हाँ भाई वीडियो कैमरा हायर करो और जाके शूट करो. That's not going to happen. Yeah. But overall, Absolutely. it is part of the Mumbai Indians Reliance family. Same umbrella. It's the Yeah. same umbrella. Not just So- Rohit, just Rohit, but plenty of players. So Vishnu was Yeah. kind of sending comments left, right, and center. So just kind of answering him. Yeah, Karna, please go and ahead. साहिल, वी वर टॉकिंग अबाउट के मेगा ऑक्शन है 1 साल बाद, और मेगा ऑक्शन में यूजुअली आप 3 प्लेयर रिटेन कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं. मुंबई इंडियंस इज अ कैंप दैट यूजुअली हैव बिग नेम्स, पोटेंशियल फ्यूचर स्टार्स, बीट सूर्य कुमार, नाउ तिलक, जसप्रीत बुमराह. तो नाउ दैट रोहित शर्मा इज नॉट द लीडर, नॉट द कैप्टन, तो वो कितना मुश्किल हो जाएगा मुंबई इंडियंस के लिए, क्योंकि आपको रोहित शर्मा को अगर रिटेन करना है देन यू हैव टू रिटेन हिम ओवर द लाइक्स ऑफ ईदर जसप्रीत बुमराह और तिलक वर्मा और सूर्य कुमार और हार्दिक हिमसेल्फ. तो वहां पे क्या मुंबई इंडियंस के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, क्योंकि मुंबई इंडियंस, एज चेतन से, दैट दे टेक केयर ऑफ देयर ओन पीपल एंड इट्स वन फैमिली एज दे से. तो वहां पे मुंबई इंडियंस के लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम एक क्रिएट हो सकता है. आई थिंक वो प्रॉब्लम का हल शायद रोहित खुद भी कर देगा ना. मतलब अभी वी आर सेइंग दैट सब कुछ एमआई करेगा. हु नोज कल जाके मतलब मिड सीजन के अंदर रोहित स्ट्राइक्स अ डील विद अनदर फ्रैंचाइज फॉर द मेगा ऑक्शन एंड ही रीबिल्ड्स द साइड फॉर देम. Maybe say a Sunrisers Hyderabad, maybe a Lucknow. Who knows? See, this ecosystem. It's Chetan is right. See, it's larger things at play. It's not just cricket or 40 overs of action which we see every day. Behind the scenes जो चालू रहता है, IPL is no longer a 2 month का property boss. 365 days a year franchises are at it. अगर आप recent brand report अभी देखेंगे franchises का, the way the newer franchises are growing. LSG, I think if I'm not wrong, grew by 47% in just a couple of seasons. Gujarat Titans have got such a good head start. So all these franchises I'm saying are working like round the clock 365 days a year, and for them more than cricket is at play. A lot of brand value is associated. And Rohit, at the fag end of his career, he also wouldn't want to be in a situation where a franchise is negotiating with him कि boss हम आपको release मतलब retain नहीं कर सकते, we'll get you at the auction. You think Rohit will get into that situation? वो उससे पहले अपने cards, he'll play his cards, right, boss? He's one of the most accomplished Indian players ever and a very fine captain in the IPL. So he's a hot property, I would say. Now it depends how hot franchises are kind of to get him. And if I may add, with this whole situation, something very, very unprecedented has happened. क्या किया है मुंबई इंडियंस ने? उन्होंने गेम चेंज कर दिया है. They wanted a new captain. They went and got that captain from another team. People are not realizing how big this is. In the middle of an auction, in the middle of an IPL cycle, ये मेगा ऑक्शन की बात नहीं हो रही है. यहाँ पे नॉन रिटेन्ड प्लेयर्स की बात नहीं हो रही है. उन्होंने डंके की चोट पे कहा है कि बॉस ये लो आपके पैसे, हमें हार्दिक पांड्या चाहिए. प्लेयर ने कहा कि despite leading to a team to 2 finals, winning one of the finals, and he's saying कि नहीं मैं तो जा रहा हूं भाई. Something unprecedented has happened. Now every team, कल को चेन्नई सुपर किंग्स, yes, they want Gaikwad as captain and probably Gaikwad will be captain, but what is stopping them from saying, you know what, we can do the same and buy a captain from another team to replace MS Dhoni? It is very much possible. हम यहाँ पे बुमराह की बात कर रहे हैं, कल वो बोले अरे बुमराह फोन करके, do you want to be captain after MS Dhoni?
Bumrah goes to CSK. किसको मालूम है? I'm just maybe it will happen, maybe it not happen. Jasprit Bumrah is very very loyal, to Mumbai. He loves playing for Mumbai, but who knows? Yeah. और for the fact that उनको बोला जाए कि रोहित शर्मा को वो बोले कि बॉस, जैसे हार्दिक पांड्या को बोला गया था कि we can't retain you. Similarly, रोहित शर्मा को बोला जाए कि लिसन, हमारा कैप्टन है, 15 करोड़ पे ये रिटेन हो गया, 15 करोड़ पे जसप्रीत बुमराह रिटेन हो गया, हमारे पास 2 प्लेयर ही बचे हैं रिटेन करने के लिए, वी कांट पे यू मोर देन 7 crores. Do you think रोहित शर्मा will accept 7 crores? उससे अच्छा वो ऑक्शन में जाएगा, he will get 15 crores आंख बंद करके. So something unprecedented has happened. It has changed IPL forever. हम यहाँ पे हार्दिक रोहित खेल रहे हैं. जिस लेवल पर गेम चल रही है, that is not even इस कॉन्वर्सेशन के दायरे में भी नहीं है वो. Just adding to what Chetan is saying, if all our viewers did watch that show, we did an explainer on Hardik Pandya's trade. K. Srinivas Rao, our group sports editor, so Ramya Kaushik and I was there. So I think Srinik did mention that line a week back, that this is start of a new trend in the IPL. We are probably still far away from a free market scenario, but you never know कि वो सिचुएशन कब आ जाएगा where a player is in that position कि boss, I'll decide which franchise I play for. अभी it's a very franchise driven approach, very 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 limited to the supply and demand of the IPL, the auction purses, all those things are at play. But Hardik वाला चेतन से completely agree, मतलब कि it is a start of a new trend. मतलब आप सोचो यार बॉस, yes, ये मतलब अगर मैं आप सोच रहा हूँ उस बात को कि मिड सीजन मिनी ऑक्शन से पहले वर्ल्ड कप के बाद कैप्टन उठा लिया, मतलब दुनिया हिला दी, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, मतलब all in the space of like 15-20 days. We all are kind of doubting कि boss, where will they get the money from? They had a plan for that. Where will we get the slots from? They had a plan for that. How will we create that auction purse to be busy at the table on December 19? They had a plan for that. 11-12 प्लेयर रिलीज करे, आर्चर रिलीज करा, सैम ग्रीन को ऑल कैश ट्रांसफर करा, एक पोटेंशियल फ्रेंचाइज आइडेंटिफाई करी जो कैम ग्रीन को ऑलरेडी चाहते थे, who were bidding for him till the bid went to 7 crores, 6.75 if I'm not wrong, Royal Challengers Bangalore. So मतलब master strokes unlimited वाला scenario ये हो गया. And again credit to MI for kind of pulling this heist off. मतलब heist ही कहूंगा इसको तो यार, mid season के अंदर मतलब कौन करता है ऐसा, वो भी जब आपको पता है कि there could have been a situation, there could have been, मतलब ये next mega auction में हो सकता था, हार्दिक पूल में चला जाता, पूल के अंदर MI पूरा they could have gone all out, but वहां पे कोई गारंटी नहीं था. वहां पे अगर MI 15 पे जाता, सामने वाली टीम हो सकता है 25 खर्चने को तैयार थी हार्दिक पे. It's Hardik Pandya, boss. It's an Indian player, an Indian all-rounder, premier Indian all-rounder. So you never know where the bid would have stopped. Chris Morris को अगर हम 15-16 करोड़ दे सकते हैं, युवराज सिंह को 16-17 करोड़ दिए, both kind of, I'm not saying युवराज हार्दिक से कोई inferior player था, but I'm just saying what Hardik brings to the table, and also with regards to captaincy, anything could have happened at the mega auction. But MI kind of covered all bases there. अपना भी फायदा, जीटी का भी फायदा, ग्रीन का भी फायदा, आरसी का भी फायदा, एवरीवन इज हैप्पी. और मैं अभी भी कह रहा हूं, मेरे को पूरा फीलिंग है नेक्स्ट सीजन एमआई कैम ग्रीन को खरीद लेगा मेगा ऑक्शन के अंदर, क्योंकि आरसीबी तो रिटेन करने नहीं वाला. तुम्हें क्या लग रहा है कि वो they let RCB is going to screw it up? Absolutely. I'm saying वो रिलीज कर देंगे. I can't wait to watch. वो रजत पतेदार को खिला रहे होंगे कैमरन ग्रीन के आगे, ग्लेन मैक्सवेल को वो नंबर 6 पर खिला रहे होंगे. वो है, वो भाई वो बोल दिया अभी. I was reading the statement where they have identified Cam Green for 5 and 6 spot, so they'll play Patidar at 3. I know, right? Number opening with 5 and Maxwell at 4. Number 3 Rajat Patidar and number 4 Glenn Maxwell. He is going to bat at 5. He's going to waste the season at 5, and then he comes back to Mumbai Indians. It is obvious. Like let's not even go there. उन्होंने सिर्फ अपने 17 करोड़ वेस्ट किए हैं और कुछ नहीं है. और MI 4 में खरीद लेगा क्योंकि उसके स्टॉक्स इतने नीचे चले जाएंगे आफ्टर व्हाट आरसीबी विल डू टू हिम. मेगा ऑक्शन में आप वैसे भी 15 करोड़ के प्लेयर नहीं खरीदोगे ना यार. मेगा ऑक्शन में आपका you have a larger field to buy with a limited purse. तो उसमें आपको 8 करोड़ में कैमरन ग्रीन मिल जाएगा. मेरे को तो होता साहिल और चेतन की दो अलग अलग लाइनों को जोड़ के मैंने ये सोचा है कि अगर रोहित विद साहिल सेड का ही कैन वेरी वेल कॉल अप अनदर फ्रेंचाइज एंड से आई कैन कम एंड रीबिल्ड अ टीम, और वहां से चेन्नई कॉल करती है वी नीड अ कैप्टन, तो अगर ये हो जाए तो. बट ताउस, डू यू सी रोहित प्लेइंग फॉर अनदर टीम अगर मेगा ऑक्शन में ऐसी सिचुएशन आती है कि एमआई नोस एंड सेज दैट ओके यू नो वी कांट रिटेन यू, तब रोहित गोइंग टू अनदर फ्रेंचाइज और बिल्डिंग अनदर टीम, डू यू थिंक दिस इज अ पॉसिबिलिटी इन दिस केस? Why not? वो खुद ही हैदराबाद से आए थे, डेक्कन चार्जर से मुंबई. शुरुआत तो डेक्कन चार्जर से ही हुई थी ना उनकी हैदराबाद में.
उसके बाद मुंबई इंडियंस और उसके साथ रहे, हाँ बॉलिंग हैट्रिक भी निकाले, बॉलिंग भी निकाले। तो ये मतलब सी इन टुडेज टाइम देयर, आज आप एक्सपेक्ट कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब सरप्राइजेस एक, ये सब सरप्राइजेस नहीं है कॉर्पोरेट इन दिस काइंड ऑफ क्रिकेट, फ्रेंचाइज क्रिकेट। आप हु वाज एक्सपेक्टिंग हार्दिक पांड्या लीडिंग बैक टू बैक फाइनल्स गुजरात टाइटंस को, और सडनली आप यहाँ पर बुला लेंगे, मतलब स्पेकुलेशन तो शुरू हो गए थे सीजन के पहले या ऑक्शन के पहले, बट देन कौन सोचा था, बट देन दैट ट्रेंड हैज स्टार्टेड नाउ, तो धीरे धीरे ये सब होगा। एंड आई वोंट बी सरप्राइज कि कल शायद चेन्नई might groom a youngster rather than get a Rohit Sharma who's on the verge of retirement. So I mean somebody who wants to rebuild a team. अच्छा ये बात बताओ आपको, रोहित शर्मा अगर आप सोच रहे हैं कि धोनी के लेवल पे मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट हैं या वो वैसा कर सकते हैं जैसा वो चेन्नई के लिए किए थे, तो यहाँ पर उनको एक रेडीमेड टीम मिली थी जो उनके साथ बैलेंस साथ साथ, तो ही वाज एज गुड अ कैप्टन एज हिज टीम, जैसा जो फ्रेज है जो कहा जाता है। तो आप मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट तो नहीं कहेंगे, टीम रीबिल्ड नहीं कहेंगे, बट हाँ उनका एक रोल रहेगा फ्रेंचाइज में। भाई आप थोड़ा जैसे रणजी ट्रॉफी में होता है, आप देखते हैं क्रिकेटर्स आके, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स खेलते हैं आके उनकी टीम से और उनको मौका मिलता है एक्सपीरियंस करने का, तो वैसे ही कुछ ना कुछ रहेगा रोहित शर्मा के साथ। तो आई वोंट बी सरप्राइज यार, इट्स समथिंग लाइक नॉट सरप्राइजिंग एंड दिस माइट हैपन। मे बी कोई लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए जा सकते हैं, कोई टीम जो बहुत साल से डेस्परेट है जीतने के लिए, या जीती नहीं है ट्रॉफी, दिल्ली कैपिटल्स बोलेगी आ जाओ भाई, हमें एक कप्तान नहीं मिल रहा, तो 2-3 सीजन आप कर लो और लीड कर लो और जिता दो, आप जिता सकते हो, आपके पास पूरा एक्सपीरियंस है, 5 आईपीएल टाइटल आपके पास। तो आई वोंट बी सरप्राइज, लाइक हो सकता है बहुत, और बहुत पॉसिबिलिटी भी है, क्योंकि रोहित शर्मा कितना खेलेंगे यार मुंबई इंडियंस के लिए, अगर अगर वो ये साल परफॉर्म नहीं किया, गॉड फॉरबिड, तो शायद उनको मूव करेंगे। और आई मीन एक ये भी सैचुरेशन पॉइंट भी रहता है, ह्यूमन नेचर सैचुरेशन पॉइंट भी रहता है, कितना करेगा आदमी एक टीम के लिए। तो आई थिंक दैट इज फाइन विद, स्पेशली इन दिस फ्रैंचाइज। सी पीपल थिंक व्हेन दे प्ले फॉर रणजी ट्रॉफी कि यार मुंबई छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगा या दिल्ली छोड़ के मैं कहाँ, वो एक हार्ड रहता है, बट फ्रैंचाइज क्रिकेट में मुझे लगता नहीं है, बिकॉज इट्स मोर कॉर्पोरेट, मोर कमर्शियल देन एनीथिंग एल्स। तो यहाँ पर नथिंग डजंट बीट फॉर, I mean, yeah, for players. I mean, so all pro. I mean, just look at the comments. अभी हमने बात ही की है कि it is changing. The whole scenario might be changing now. Everybody starting to dream कि SRH में चले जाओ, DC में चले जाओ, ये कर लो, मजा आ जाएगा यार, ऐसा फ्री मार्केट हो गया तो। That's what I'm saying कि this is era defining in an unprecedented fashion. आप एक मिनट के लिए सोचिए, I'm not saying कि Rohit Sharma staying at Mumbai Indians is unlikely. No, I think he might finish his career at Mumbai Indians. Maybe he just wants to keep on playing without the burden of captaincy. Like Virat says कि मेरे को RCB के लिए खेलना है. RCB क्या सोच रही है? MI क्या सोच रहा है? That also matters. Tomorrow, like I said, कि mega auction जब भी आता है, जब भी player retention आता है, that defines everything. मेरे पास इसमें बहुत गंदी लाइन है, मैं बोलूंगा नहीं. Anyway, my point is tomorrow if the calculations don't sit together, don't gel well, then obviously Rohit is free enough to go and find a different. He did not start his career at MI. He might not end his career at MI. We don't know. Let's be very honest about that. So from that perspective, from that perspective, it's a free market, लेकिन it is a market changing thing. IPL में एक बिल्कुल यार आप देखो, you talk about football, हम लोग हमेशा कंपेयर करते हैं फुटबॉल लीग्स के साथ, EPL के साथ, जो भी है यूरोपियन लीग्स के साथ. यूरोपियन लीग के मॉडल पे IPL बनाया गया था, राइट? But there was always that restriction of player exchange, player transfers. This is path breaking. They found a loophole where they could offload a few players, they could calculate their salary, they could pay extra, they could figure out everything. Mumbai Indians, and I'm not surprised Mumbai Indians did this. कोई और फ्रेंचाइजी नहीं कर सकता है ये, कोई और फ्रेंचाइजी नहीं कर सकता है. That first step had to come from somebody like a Mumbai Indians, because they are that clever. That is how well they are run. So from that perspective alone, आप देखो, this is game changing. This is मैं नहीं कह रहा हूं कि ये हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, but there will be a time where IPL has to move towards a free market transfer of players, like we see in European football.
You can't always keep on doing the auctions and this and that. Kabhi na kabhi draft and free transfer of players. When I say free transfer, I mean a free market, not just just a 15-day window or rules kind of way. आज आप जाके देखो $100 million से कम तो फुटबॉल प्लेयर की वैल्यू है ही नहीं. From that perspective I'm talking about a free market. ये कभी ना कभी, आज नहीं तो 5 साल बाद, नहीं तो 10 साल बाद ये होना ही होना है, because the IPL is just going to grow bigger and bigger. एब्सोल्युटली. और दो और सवाल है. एक अनिमेश से काफी टाइम से हमने ओपिनियन नहीं लिया. डोंट एग्री. If I can take this question, Pranav, please. Yeah. I am itching to take this one, Animesh, with your permission. See, यहाँ पे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं. आप पावरफुल बोल के आप you get that Reliance umbrella on top of Mumbai Indians. IPL doesn't work like that. You have an auction purse. उसके अंदर वो रिलायंस के बैंक अकाउंट से पैसा नहीं भर सकते बॉस. वो 100 करोड़ का पर्स ही मिलेगा ऑक्शन के अंदर. वो उनका आउटलुक है. वो उसमें 70 करोड़ एक प्लेयर पे खर्चे या 30 करोड़ खर्चे या 15 खर्चे. So ये confusion, I don't, मतलब थोड़ा सा education I think is important on this front, that where people kind of confuse Reliance with Mumbai Indians all the time, that they have deep pockets, they have deep purses. Boss, IPL doesn't work on an elastic budget, right? आप ऑक्शन में अगर बैठते हो, हर टीम के पास वही रूल्स होते हैं, वही. And let me add, ये loophole वाला point है. That loophole is not against the rules. Yeah. That loophole is in favor of seizing an opportunity like this. Yeah. जहाँ पे एक player जो है वो जाना चाहता है and the franchisee is okay to let him go, but at a value. That's the loophole. It's not against the rules. It's in the IPL rules. Please go and check the IPL rules and conditions for a player transfer. Yeah. कि if a franchisee is willing to pay over, let's say 15 crores, और उस 15 crores में how much are they willing to pay extra, and the player is entitled to it, the franchisee जिसके पास पैसा जा रहा है, that is entitled to it. So it was done. No, it's a confusion. This is wrong. The comment is wrong. No. This I'll just add to what Chetan is saying. So what Mehul is trying to say, Mehul, I'll clear the air for you. And what Chetan was trying to address, मैं थोड़ा technical term use करके समझाता हूँ. That value over the league fee of 15 crore, it's called a negotiated increase. The increase happens between the two franchises. Right now, Mumbai Indians and Gujarat Titans. 15 crore के ऊपर hypothetically say Hardik का transfer was fixed at 30 crores. I'm just giving you a number. That number is undisclosed right now. 15 crore का जो excess हुआ है, out of that, GT can share up to 50% with Hardik Pandya and can pocket remaining profit. That remaining profit doesn't. And Sahil, let me add. Yeah. This rule of the undisclosed fee, this rule was kept so that things like this don't happen, or things like this don't happen in a free manner or a very regular manner. क्योंकि आप एक मिनट के लिए सोचो, when the IPL was formed, when this rule was formed, we're talking about 2008. We're not talking about this humongous amount of money that has come into the IPL. But at the same time, आप एक player की value, let's say 30 crores. Can you imagine Hardik Pandya being worth 30 crores? That makes him the most expensive player in the IPL history ever, where you have MS Dhoni and Sachin Tendulkar and Virat Kohli and Rohit Sharma. So try and understand from that logic. ये कुछ against the rules नहीं हुआ है. ये something unique has happened. And only. No, it's not. How do you know? How do you know? That's not a fact. How do you know that's a fact? Am I contacted Hardik directly? Matlab, this is illogical. No, had that happened, going by the rules, what happened with Jadeja back in 2009, 2010, when he was with RR, when he was negotiating his increase. 2013. हाँ, तो वो फिर बैन हो जाता ना हार्दिक पांड्या अगर वो खुद करता तो. Exactly. See, lot of things are at play. That's called The franchises. That's not how it's done. ये आपको लग रहा है कि इतनी बड़ी जो प्रोसेस है, इतना बड़ा जो रूल है, एक मैं लूपहोल कह रहा हूँ, एक रूल का एडवांटेज लिया गया है. It's not even a loophole which is against the rules in a way. It is there to be followed if an opportunity arises. You are missing the point here, and I'm talking to the guy who commented. The Mumbai Indians and Gujarat Titans created that opportunity. इसके लिए प्लेयर को राजी होना पड़ता है, दोनों फ्रेंचाइजीज को राजी होना पड़ता है. And Jadeja banned for 2010 season. I know. Yeah, so Jadeja was doing that negotiation at a personal level. Now GT का
there was an interview of Colonel Arvinder Singh. Okay, so Mehul is saying that GT has stated it. Just clearing that interview. He did not say that it was because that interview was done by the Network 18 group. So it's important to put the facts right out there. So GT hasn't stated that. GT is saying that there is a practice in play where there are certain attempts being made. Hardik ka case wasn't mentioned there. Colonel Singh didn't say that Hardik was approached directly. It was a negotiation which was done between the two franchises, after which GT earned some money. Hardik got a negotiated increase, I'm guessing. MI got the player they wanted. Everyone was in a happy place. I don't see यहाँ पे हम कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं. जो लूपहोल चेतन बात कर रहे हैं वो रूल में लिखा हुआ है कि आप कैसे ऑपरेट कर सकते हो. How you can exercise your deep pockets. Those deep Just pockets because something is called a loophole, it doesn't mean it is against the bad. rule. Yeah, it's a It good is against loophole. the rule. Loopholes का मतलब होता है कि there is a rule which can be taken an advantage of if a unique opportunity arises. And this is that unique opportunity that came to play where Mumbai, GT and Hardik Pandya worked for it. आपको क्या लग रहा है कि इतना सारा क्रिकेट होता है, इतनी सारी क्रिकेट मीडिया है, अगर कुछ भी गलत होगा तो एवरीबडी इज जस्ट गोइंग टू सिट क्वाइटली? Then absolutely you're even all the other teams. So this is a very different debate. हम कहीं और चले गए. We'll come back. काफी टाइम बीत चुका है. 2 और सवाल है, एक अनिमेश से, एक साहिल से. उसके बाद इस लाइव सेशन को हम एंड करेंगे. अनिमेश, थोड़ी देर पहले एक सवाल आया था, थोड़ा और मुंबई इंडियंस की टेक्निकलिटी पे आ जाते हैं. वाइस कैप्टन को लेके कि अब बुमराह होगा या सूर्य कुमार यादव होंगे. तो आपके हिसाब से सूर्य कुमार यादव इंडिया के T20 कैप्टन है, तो लॉजिकली उनका सेंस बनता है वाइस कैप्टन होना. लेकिन बुमराह की लीडरशिप को लेके भी काफी सवाल उठ रहे हैं. तो व्हाट्स योर टेक? हु शुड बी द वाइस कैप्टन विद हार्दिक पांड्या फॉर मुंबई इंडियंस, नॉट इंडिया? देखिए, अभी जिस तरह से सूर्या कैप्टनसी कर रहे हैं इंडियन टीम की, उस हिसाब से मेरे हिसाब से जो बेस्ट कंटेंडर होंगे वो एमआई के लिए वो तो सूर्या ही होंगे. और जो कहीं ना कहीं सवाल हार्दिक को लेके उठते हैं कि उनकी जो फिटनेस को लेके, वही सवाल जसप्रीत बुमराह पे भी उठते हैं कि वो इतना वर्कलोड ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे. तो ये दोनों चीजें, वो दोनों ही उनके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेंगे अगर दोनों के साथ किसी एक के साथ भी जाते हैं. पर मेरी चॉइस अगर होगी तो मैं सूर्य कुमार यादव को देखना चाहूंगा, क्योंकि वो लगातार खेल सकते हैं, एमआई के साथ लगातार हर मैच में बने रह सकते हैं. अगर कहीं हार्दिक ऐसा कोई उनके साथ इंजरी हो जाती है, कोई ऐसा मौका आता है जहां पर टीम को लीड करना पड़े किसी और प्लेयर को, और वो सूर्य कुमार यादव अभी जिस तरह से इंडियन टीम की कैप्टनसी कर रहे हैं, वो थोड़ा और ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आते हैं मेरे हिसाब से. Absolutely. Just adding to what Animesh is saying, just little addition, it doesn't really matter who the vice captain is in an IPL franchise. Lot of action is controlled from the dugout also. There are a lot of vice captains sitting in a dugout, lot of strategists, lot of analysts. गौतम गंभीर आधा एलएसजी चला दिया यार, हमें रियलाइज भी नहीं हुआ कप्तान कौन था उस सीजन. तो मतलब वाइस कैप्टन वही है कि अगर इंजरी आती है तब कौन लीड करेगा, उस हिसाब से मेरा मानना है कि सूर्य कुमार यादव हो सकता है. I think Animesh made a good point, maybe like thinking on those lines, you may not play a Jasprit Bumrah for all 14-15 games, boss, because you want to ensure his longevity in red ball and white ball cricket for India too. So it's not really important, and I don't see कि जसप्रीत बुमराह को आपको जरूरी है बॉस 15 गेम खिलाना. उसको भी आप रेस्ट करोगे ना, फास्ट बॉलर है. और स्काई आपके लिए हर गेम में अवेलेबल होगा, तो मेरे हिसाब से उनको ही आप रखना चाहिए एज एन डेप्यूटी. साहिल, एक आखिरी सवाल लाइव एंड करने से पहले. हमने देखा है MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये एक बहुत बड़ा फैन बेस अपने साथ लाते हैं टीम के फैन बेस में ऐड करने के लिए. एंड बट नाउ दैट रोहित शर्मा इज नॉट द कैप्टन, क्या ये MI की जो सोशल ब्रांड इमेज है, सोशल मीडिया और फैंस के नजरिए से, उस पर थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि बैकलैश हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे फैंस की तरफ से. दे आर नॉट हैप्पी विद द डिसीजन कि रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटा दिया गया है. तो क्या MI का वो उस एरिया का ब्रांड इमेज है, सोशल मीडिया का और ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और फैंस का, उस पे थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा टीम को? आई थिंक अगर फ्रेंचाइज या टीम्स ये सब सोचने लगती तो संजू सैमसन आज टेस्ट कैप्टन होता ना, क्योंकि वो उसका फैन बेस तो रुकता ही नहीं है. तो दीज थिंग्स डोंट, मतलब सी, यू आर टॉकिंग अबाउट अ फ्रेंचाइज व्हिच हैड कैप्टन्स लाइक सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, यू आर टॉकिंग अबाउट दोज नेम्स. सो इवन दोज वर ट्रांजिशन, राइट? महिला जयवर्धने की अगर आप स्टेटमेंट देखोगे, द काइंड ऑफ ट्रांजिशंस व्हिच हैपन व्हेन इट कम्स टू कैप्टनसी एट MI. कुंबले वाज आल्सो द कैप्टन. नहीं, कुंबले कैप्टन नहीं था, सॉरी, माय बैड. पॉन्टिंग वाज देयर, सचिन तेंदुलकर वाज देयर. सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड विद MI, राइट? इन 2013 से 2023 नेम फ्रेंचाइजेस जिन्होंने इतना लॉन्जिविटी दिखाया अपने कैप्टन को लेके. MS धोनी is one. He had to change franchises after CSK was banned. Virat Kohli was second. I don't see a third name except Rohit Sharma.
where captaincy hasn't changed hands that often. So it was there, it करना था बॉस. अभी नहीं करते तो आप कब करते ना? मेगा ऑक्शन में आप वही MI have saved themselves a season of chaos. That's how I look at things. So they have clarity now heading into the mega auction. They can probably channel. There could still be a no, given their squad, it could still be a chaotic season. But what they are trying to do, in my opinion, is कि जो भी कमी है, at least हार्दिक को पता चल जाए as a captain, because he's the one who's leading the team in the future. तो फिर उसके बाद फुटबॉल में भी यही होता है ना कि आप जब नया मैनेजर आता है तो वो एक सीजन या हाफ अ सीजन वो देखता है कि क्या कमी है स्क्वाड में और फिर you plug in the gaps. And or you in this scenario you go about rebuilding that squad. So I think from that perspective it's a good positive change, because you can't change too much. वो जो squad है अभी है, और अभी मिनी ऑक्शन जब आएगा उसमें 4-5 प्लेयर जो आप ऐड कर पाओगे. उनको पेसर्स चाहिए, maybe they need a more reliable spinner, लेकिन जो core है वो है. You know, I see them making playoffs this season if they get the bowling right. They are Bumrah now. दो fast bowler ले आओ. अभी you know what, let's hold our horses regarding that, because बाकी not. मैं तो बोल दिया, वायरल कर दो मेरे कमेंट्स को, वायरल होने वाला है. My point is still, my point is it could still be chaotic, but from a future building perspective it's a positive change. Fair enough. Thank you so much, guys. It has been a very long debate and it was a very fruitful, very intense at a certain point of time. Thank you so much to all our viewers जिन्होंने इतने सवाल पूछे और हमारे साथ कनेक्ट हुए. अब देखते हैं मुंबई इंडियंस का फ्यूचर क्या होगा, क्या वो होगा जो साहिल मल्होत्रा ने कहा है कि प्लेऑफ में जाएंगे, या उनके लिए थोड़ा क्योटिक सीजन होगा. थैंक यू सो मच टू ऑल आवर व्यूअर्स. प्लीज स्टे ट्यून्ड टू क्रिकेट नेक्स्ट फॉर फर्दर अपडेट्स. Thank you. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट.